श्रुति वासुदेवाय श्री ब्रह्मवासो जातोषि मे जो शुचिराटलासु देवाजांगो जायते भगवतो यति इत्यवर्ष नन्यदन्ति भवन्नपि तन्नो शुष्कमाया गुणमती करा दुरूप्य विवर्षि रूपं चरेतद्गर्भो सोदेनो सत्सन्निवृतमनसो सदनुग्रायो आदौ गृहीतमवतार सैक ऐकबीजं जन्नभिपद्म भवनामभिविलासनम् मातो परम्परतो जगद्भगवतो स्वरूपमानत्र मात्र विकल्प विद्धवर्षः पश्यामि विश्वसीजमेक विश्वात्मना विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमनन्त वरद उपासितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलं मङ्गलायो ध्यानेनो स्मृणु दर्शितं नो उपासकानां तस्मै नमो भगवतो अनुविधेम तुभ्यं जो अनादितो नरकाभाग वीरसत्प्रसङ्गै जेतु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रङ्घ्रीकर्णविवर्गैः श्रुति जातनीतं भक्ताग्रीतचरणपरयातो तेषां नापैति नाथो हृदयाम्बुरुहारस्वपुंसा तावद्भयं द्रवीपदे सूर्यमित्यं शोको सृष्ट्वा परिभवो रिपुसञ्चो लोभः तावन्मेत्यासदहो ग्रहो आर्तिमूलं यावन्नोतिङ्घ्रिमवयं प्रोवृणीतलोक दैवेनोति हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमन विमुखेन्द्रिय कुर्वन्ति कामसुखलेशवायो दीना लोभाभिभ्यो दमन सवकुलानि शस्य क्षुत्तिरात्मो भिरामा मुहुरज्यमाना शीतोस्वाता वयवैतरेतरासु कामाग्निच्युतरुषासु सुदुर्भयेनो सम्पश्यतो मनो उरुक्रम हीजते मे जावल्पृथक्त्वमिदमात्मनो इन्द्रियार्थमावलं भगवतो जनो ईशो पश्यति तावन्नो संसृतिषु प्रतिसंक्रमेतो व्यर्थापि दुःखनिमित्तं भवन्ति कृत्यार्था अन्यापि च अर्थकरणानि शीनिशयाना नानामनोरसधियाखिलभग्ननिद्रा दैवाहतार्थरसनारीशयेऽपि देवो जुष्मत्प्रसङ्गविमुखायो संस्मरन्ति त्वं भक्तियोगो परिभावीत हृत्सरोजाससे श्रुतेक्षीतपठो ननु नाथो पुंसां जज्जद्धियातो उरुगायो विभावन्ति तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहायो नाति प्रसिद्यति नाथो उपचितोपसारैराधीत सुरगणैर्भीतिबद्धकाम जत्सर्वभूतदया सरस लभ्यायैको नानाजनिशेषित निरन्तरात्मा पुंसावते विधिव कर्मभिरज्यरै येनो चोग्रातवसा परिसर्जमान आराधनं भगवतस्तन्मो सत्क्रियार्थे धर्मे पीतो कसिञ्चिन न म्रिय नियतो नो तत्र सत्सत्स्वरूपमहमैसेयो निपद्यते मोहायो बोधधीमानां नमो परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीलावसायु ते नमो इदं चो विषमस्वराय जैसावतार गुणकर्म विरम्बनानि नवानि सुविगमे विवशात् गृह्णन्ति ते अनेकजन्म समनं तस्यैव हित्वा संजान्त पाकृतमृततमसं प्रपद्ये जो वा हंसो परिसत्यो विभु स्वयंचो विद्युद्भवा प्रलया हेतवे आत्ममूलम्
भीत्वा त्रिपाद्बभृदो एको ऊरु प्रयो अतस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्म निरतो कुशले प्रमत्तो कर्मण्ययं तदुदीते भगवदर्शनेस्वे जस्तावरेशो बलवानी हो जीवितासां सज्जत सीनतीनिसायो नमन्ति तस्मै जस्माद्दीभेऽहमपि दीपरार्धातिंसा मज्जासीतं सकललोक नमस्कृत तेपे तपो बहुषु वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यं गिर्जं मनुष्या विविधापि जीवजोनिस्वालेशयात्मकृतसेतु परिस्याजु रेमे निरन्तर विषयोपकस्मै नमो भगवते पुरुषाय उत्तमाय जो अविद्यायानुपटोपि दशर्षविद्या निद्रामुबाहो दशरीकृतलोकमात्र अन्तर्जले हि जलेक कशिपु स्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनी जन ससुखं बिबृन्दन् जन्नाभि पद्मा भवना भवदाहु मासमिद्यालोकत्रयोपकरणो जदनुग्रहेण तस्मै नमस्तु उदरस्थ भवाय जो निद्रावसान विकसन्न नीलक्षणाय सोऽयं समस्तघटां सूरिधृक् आत्मा सत्येन जन्मृहयति भावान् भगेन तो नैवो मे अनुसमास्पृष्टत् जराहो सख्यामि पूर्विदं प्रणतो प्रियेषु येषु प्रपन्नवरदो रममायात्मशक्त्या जज्जत् करिष्यति गृहीतगुणावतार तस्मिन् सविक्रमामीदं सृजति चेतो जुञ्जीतो कर्मो सबलं सुधराभिसध्यं नाभिरदाति हो जतोऽम्बसि जैषो पुंसो विज्ञानशक्तिरहमामनन्तशक्ति रूपं विचित्रमिदमैषो बिर्बिर्नीते मेवा रीरीभीष्टो निगमैषुगीरां विसर्ग सोऽसाद्वदभ्र करुणो भवान् विरुद्ध प्रमत्तिनेनु नयनाम्बुरुहं विसिन्न उठायो विषभियायो चूनो विषादं मध्वा गिरा पनयतात् पुरुषो पुराण श्रीमैत्रियुवाच सोऽसम्भवं निसम्यैकं तपोविद्या समाधिभिः जावन्नोवाचो स्तुत्वा विरामो शोखिन्नवत् अथाभि प्रेतसन्निख्यो ब्रह्मणो मधुसूदनो विसन्नचेतसत्येनो कल्पव्यतिकराम्बसा लोकसंस्थान विज्ञानो आत्मना परिचिद्यतो तमावगाठायो वाचां दुष्फलं समयन्निव श्रीभगवानुवाचो मे वीरगर्भोगास्तुतिं सर्गो उज्जनमावहो तन्मायमापादितं गृध्यो जन्मा प्रसरते भवान् भूयष्टं तपोआदिष्टं विद्यां चैव मदस्समां तभ्यामन्तर्हिति ब्रह्मन् लोकान् त्रैख्यास्तपापिता अतो आत्मनि लोके भक्तियुक्तो समाहित द्रष्टामि मां ततो ब्रह्मन् मयि लोकोष्टमं समात्मन दधातु सर्वभूतेषु दारु वर्षेमीवोषितं प्रत्यक्षितो मां लोको जध्यातद्धेवो कस्मलं दधारहितमात्मानुभूतेन्द्रियगुणस्वै स्वरूपेणो मयोपेतं पैसन् स्वराज्यामृशति नानाकर्मवितानेन प्रजा बहिर्विशिक्षितो नात्मावशित् ऐतस्मिति वर्षीयान् मदनुग्रहान् ऋषिमज्जं नो दध्नाति पापीयां स्वां रजोगुणा
जन्मनो मयि निर्वृतं प्रजा संसीतोऽपीति ज्ञातोऽहं भवता सत्यज्ञो दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां जन्मान्तं मन्यं श्रीयुक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मशिरामद्भिरासि कीर्षयात्मा दर्शितोऽयं बहिः नालीनो शल्ये मूलं पुष्करेशो विसन्नत जट्टो कथाङ्गो मत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं जद्वातविशीते निष्ठासु येषु ददनुग्रह प्रीतो अहमस्तु बद्धन्ते लोकानां विजयस्या जरस्तौ विगुणमयं निर्गुणं मानुवर्णय जो ये तेनो पुमान् नित्यं स्तुतास्तोतेनो मामपि तस्यां सम्प्रसिद्धेयं सर्वकामो बलेश्वरीं पूर्तेनो तपसा यज्ञै दानै योगै समाधिना रन्धं निःशेषा पुंसो मत्प्रीति त्वन्तु विन्मतम् अहमात्मात्मानं धातु पृष्ठो सन् तेषामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहार्दो दोषार्पितोऽप्यो सर्वविदो मयि नीदम् आत्मनात्मा योनिना प्रजा सीजो यथा पूर्वं चाञ्चो मज्जानुशीरति मैत्रिवाच तस्मादेवं जगत्सृष्ट्वा प्रधानपुरुषेश्वरो विजितं श्रीनो रूपेणो कञ्चनाभिः नास्ति रोदसे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे पद्मोद्भवे ब्रह्मस्तवो नाम नवमोऽध्यायो श्रीमद्राधागोविन्दकृष्णप्रजानन्द बल हरि बोल हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। दशमध्यायो श्री विदुरुवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोकपितामह प्रजा ससर्जो कथिता दैहिकी मानो श्री विभो देशो मे भगवन् स्पृष्टास्तद्व्यर्था बहु वित्तमः तान् वरस्व नानु पूर्वेनो सिद्धेनो सर्वलक्ष्यान्। ईशुरुवाचो एवं संचोदितस्तेनो क्षत्रा कौशारवीर्मुनिः प्रीतो प्रत्याहो तान् प्रश्नान् हृदिस्थानथो भार्गव। मैत्रिवाचो विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यत्यानवाविश्वदराहो भावानज तद्विलोक्यादसम्भूतो वायुना जलधिस्थितः पद्ममम्भत्यो तत्कालो कृतवीर्येनो कम्पितं तपसा धीयमानेनो विद्यया चात्मसंस्थया
विवृद्ध विज्ञान बले न्यपाद्वायुं सांबसा तद्विलोक्यो विसर्ज्यापि पुरुषं गिरिति स्थितम् अनेन लोकान् प्राज्ञिनान् कल्पितास्मित्याचिन्तयन् पद्मकोशं तथा विश्वभावत्कर्मचोदिता एकं जवा किडुरुधा त्रिधा भव्यं द्विसप्तरः एतावान् जीवलोकैषु संस्थाभेदो समाधिता धर्मैषु धनिमित्तैषु विपाको परमेष्ठिषु विदुरुवाच जडार्थो बहुरूपैषु हरेदद्भुतकर्मण कालैषु कालैख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णया न प्रहो श्रीमैत्रेयीवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषस्तद्रूपादानमात्मानं लीलया सृजत् विश्वं वै ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना यथेदानीं तथा चाग्रे पञ्चादापो कीदृशं सर्गो नवविधस्तैषु प्राकृतो वैकृतस्तु कालद्रव्यागुणैरेष्यो त्रिविधो प्रतिसंक्रमः ऐक्यस्तु महतो सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयत्व महोदत्रो द्रव्यज्ञानक्रियोदय उत्सर्गास्थितियन्तु तन्मात्रा द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थ इंद्रिय सर्गो बुधस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिकादेव सर्ग पंचमो जन्मयं मनः स्वस्थस्तु तमसो सर्गो जष्टो बुद्धिकृतः रहो धर्मे प्राकृता सर्गे वैकृतानाभिमेषिणो रजो भोजो भगवतो लीलेयं हरिमेदश सप्तमो मुख्य सर्गस्तु सर्वविधन्तु स्तुवंसज वनस्पत्यो अखिलात्मा त्वक्सारा विरुदो द्रुमा उच्छ्रोटो षष्टुमा प्राया अन्तः स्पर्शः विशेषिणः किरिचामस्तो सर्गो सोष्टाविंशद्विगो मतो अविदो भूरि तमसो ग्रहाणीज्ञा ऋज्य वेदिन गौरवो महिषो कृष्ण शूकरो गवयो रुरुः द्विसफाः पशवच्चे मे अविरुस्तंचो सत्तम खरो अश्वतरो गौर सर्वतमसी तथा येते वै कपसाख्यट्टो श्रीणु पंचो नखांस श्वासिकालो वृको व्याघ्यो मार्जारो सल्लको सिंह कपिर्गजो कुंभो कूर्मो गोरहा समकारारे कंकधृक् बकसेनो भासभल्लूक बर्हिणः हंससार शोचक्राभ काकुलुकादयः खगा अर्वाश्वतंतु नवम क्षत्रियक विधोनिनाम रजोधिका कर्मपरा दुखी तो सुखमानिनो वैकृतास्तयो ये वैते देवसर्गत्यो सप्तम वैकारिकस्तु जो प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः देवसर्गो शास्त्रविधो विविधा पितरो सुरा गंधर्वासुरसु सिद्धा जैख्य रैख्यांसी चारण भूतप्रियत पिशाचात्यो विद्याध्रा किन्नराद दशैते विदुराख्याता सर्गास्ति विश्वस्वीकृताः अतोपरं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणिषु एवं रजो प्लूतो षष्ठा कल्पादि स्वात्म बूढ़हरि यत्यामोघ संकल्पो आत्मैरात्मा नमात्मना
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे तत्तद्व्युत्पत्तिक्रमो नाम दशमोऽध्याय। श्रीमद् राधा गोविंद कृष्ण प्रत्यानंद बल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश अध्याय। श्रीमैत्रेयवाच सर्वो सद्विशेषाणाम् एको संयुतः सदा परमाणुषु विज्ञेयो नीनामैक्यभ्रमोदर ततो एवोपदार्थेषु स्वरूपावस्थितेषु च कैवल्यं परमहानिकविशेषो निरन्तर एवं कालेत्य मनुमीतरे सुखे स्थौलेषु सत्तम संस्थानभूत्या भगवान् अव्यक्तो व्यक्तभूमिभू स्वकालो परमाणुर्वै जो भुङ्क्ते परमाणुता सतो विशेष भुग्जस्तु स्वकालो परमो महत् अनुर्जौ परमाणु स्यात् तसरेणुस्तयोस्मिता जालार्कारस्म्यावगत खम्यवानुपतद्भगात् अनुर्जौ परमाणुः स्यात्तसुरनेनुस्मिता जालार्करस्यावगतो खम्यवानुपतन्नरात् तसेनोस्तिकं भुङ्क्ते यो कालो सोऽकृति स्मिता शतभागस्तु दीर्घो स्यात् तैश्रीविष्टो लवः स्मितः नीमस्ति लवोगेयो वाम्नातातस्तु तयः क्षणान् पंचो विदुः कष्टान् लघुता दश एव पंचश लघूनि वै समाम्नाता दश पंचोषु नारिक ते दे मुहूर्तः प्रहरः सरजाम सप्तो वामिना द्वादशार्धपलोन्मालं चतुर्भिः चतुरङ्गुलैः स्वर्णवर्षैः कीटसिद्धं यावत्प्रसलमप्लुतं जामचत्वारो मर्त्यानामहनियुगे पक्षः पञ्चदशार्हाणि शुक्लो कृष्णञ्चो मानरः तयोः समुत्तरो मानो पितॄणां तदहर्निशं यौ निवृत्य सरसीनं दक्षिणं चोत्तरङ्गिवि अयने अहने प्राहुर्वत्सरो द्वादशो स्मितो संवत्सरशतनीनां परमाणुनिरूपितं ग्रहनक्षत्रतारश्च तत्रस्थो परमन्वादीना जगत् संवत्सरावसानेनो पर्येत्या निमिषो विभु संवत्सरो परिवत्सरो इरावत्सरो एवसो अनुवत्सरो वत्सरत्यो बीजुरैवं भविष्यति जो सिद्ध्य शक्ति मूरु लोसु शयन सो सत्या पुंसो अभ्रमायो दीवी धावती भूतभेद कालख्याया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्नस्तस्मै बलिं हरतो वत्सर पंचकायो विदुर्वाचो पितृदेव मनोद्या मनुष्यानो मायो परमिदं स्फुटं परेशांगतिमत्यख्यो देश्यु कल्पात् विहिर्विद भगवान् वीरकालेषु गतिं भगवतोन्मनु विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येनो चक्षुषा श्रीमैत्रेयवाचो प्रीतं त्रेता द्वापरं चो कालं चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादश विभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितं चत्वारि तीनिजै चैकं कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणापि शतानिषु संध्यायु संध्या संध्यांशयो कालो कालो शत संख्ययो तन्यबाहु जुगं तज्ज्ञा जतो धर्मो विधीयते धर्मचतुष्पान् मनुजान् क्रीते समनुवर्तते सो येता
न्यस्वधर्मेनो द्योतिपादेनो वर्धता त्रिलोकाजुगसहस्रं बहिरा ब्राह्मणोदिनं तावत्यैव निशाटातो जन्ये मिलति विश्वति निशावसानो आरब्धे लोककल्पो अनुवर्तते यावद्दीनं भगवतो ननु भुञ्जा चतुर्दश संसंकालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकान्धेक सप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवस्तदंश ऋषयः शूराः भवन्ति चैतेजुगपरिसूर्यसानुतेजता येषो नैनन्दिनो सर्वो ब्राह्मणस्तैलोक्यवर्तन तीर्जन्येऽपि पितृदेवानां सम्भवो दत्तो कर्मभिः मन्वन्तरेषु भावानि दिव्यसत्तं सुमूर्तिभिः मन्नादिभिरीदं विश्वं वच्युदीत पौरुष तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमो कालेनानुपगासेषु आस्ते तूष्णीं दिनते तमेभ्यः मन्यपि धीयन्ते लोका भूरादयस्तथा निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तशक्तिभास्करं त्रिलोक्यं दिग्ध्यमानायां शक्त्या संकर्षणाग्निना जन्त्यास्मनां हरलोकाज्ज्वलं भृगादयो अर्पित तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पन्ते धीतसिद्धवः प्लावयान्तत् कटाटोपो चन्दवातीरीते अर्मयाः अन्तोषो तस्मिन् शरीरे अस्ते अनन्तासनो हरिः योगनिद्रा निमिलख्यो स्तूयमानो जनालये एवं विधैरहो रात्रै कालगतोपलक्षितैः अपाखितं विशापि परमायुर्भयस्ततः जदर्धमायुजशस्तेषु परार्धमयो मधीयते पूर्वो परार्धो अप्रकान्तो जपवर्धयो प्रवर्तते पूर्वस्यादो परार्धेषु ब्रह्मो नामो मानवो कल्पो यत्रा भूतजसा ब्रह्मा शब्दब्रह्मेति जद्विदु तस्मै वन्तेषु कल्पो भूत जं पद्म अभिषद्यते जद्धरेनाभि सरसो आसन लोको सरोवरम् अयन्तु कथितो कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वराहो इति विख्यातो यत्रासि शुकरो हरि कालोऽयं द्विपरार्धस्य निमिषे उपचर्यते अव्याकृतैस्या अनन्तैषु ध्यानडेजगरात्मनः कालोऽयं परमन्वादि द्विपरार्धन्तु ईश्वर नैवेनीतं प्रभुजन्म ईश्वरो धामो मानिना विकारै सहितो युक्तै विशेषादिभिरावृतो अन्नकोशो बहिरम्भं 50 कोटिविस्तृत दशोत्तराधिक तत्र प्रविष्ट परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गता चैन्ये कोटिषु ध्यन्यराशय तदाहुरक्षरं ब्रह्मो सर्वकारानकारको विष्णोर्धामो परं सख्यात् पुरुषैश्च महात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहिता वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे कालनिरूपणकथनं नामैकादशोऽध्यायः श्रीमद्राधागुण कृष्ण प्रजानंद बल हरि बोल हरि। भगवते वासुदेवाय द्वादशाध्याय श्रीमद्वाच इति ते वर्णितो क्षेत्रो कालैख्या परमात्मनो महिमा वीरगर्भोऽथो यथा साक्षी निरोधमे ससर्जाग्रे अन्धतामिश्रमकूटामिश्रमादि महामोहंचो तमजसैष्ट्याज्ञानवृते दृष्ट्वा पापीय संसृष्टिं नात्मानं भवः मन्यतो भगवद्ध्यानपूतेनो मनस्सन्न्यास्तपोषि
सकलंचो सनंदच्चो सनातन मठात्मभु सनत्कुमारंचो मुनिन निष्क्रियानुधरीरस तान भवासे सबुपुत्रान प्रजासु ऋतुपुत्रका तन्नै सन्मोह धर्मासु वासुदेवोपरायण सो अध्यात्म श्रुतैरेवं प्रख्यत्यानुशासने क्रोधं दुर्विसंज्ञातं नियष्टमूलक्रमे धिया निगृह्यमानोऽपि भ्रुवोऽध्यात् प्रजापति सज्जो अजातो तमन्यु कुमारो निर्लोहितः शोभैरुरोदो देवानां पूर्वजो भावान् भव नामानि कुरु मे ध्यातो स्थानानि सो जगद्गुरो इति ते शोभसो पद्मो भावान् परिपालन अभ्या धावद्दया वाचा मारुदिष्टत्करोति जड्रोदसी शूरश्रेष्ठो सद्वेगजो इवो बालकः अटष्ट्वा मा विसिद्ध्यन्ति नाम्ना रुद्रो इति प्रजाः ह्रीन्द्रियाण्याशुद्धं वायुरग्निजलं मही सूर्यचन्द्रस्तपोस्तैवो स्थानान्यग्रे कृतानि ते मन्यो नु हीनसो महान् जीवो रीतध्वजः उग्रयेता भवो कालो भामतेभ्यो दिरव्रतः धीर्धृति रसलोमासो निर्युत्सरी दीपालम्बिका यावती सुरादिख्या रुद्धन्या रुद्धते स्त्रियः गृह्णीतानि नामानि स्थानानि सो सदूषण ये वेशिजो प्रजाभो हि प्रजानाम श्रीजत्पतिः इत्यादिष्टो गुरुरुना भावान्निर्लोहितो सत्वाकृति स्वभावेनो सुसर्जात्मा नमात्मा प्रजा रुद्राणां रुद्रशिष्ठानां समन्ताद्दशतां जगत् निसंयो संख्यासु जूठान् प्रजापतिरसंकृतः संकट रंग प्रजाभिः सृष्टाभिरिदिशिभिः सुरोत्तमा मया सो रुदन्ति हि विषचतुर्भिरुल्लने तपो आतिष्ठभद्रन्ते सर्वभूतसुखावहं तपस्यैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वमिदं भवान् तपस्यैव परं ज्योति भगवन्तमरोक्षजम् सर्वभूतो भावासो मन्दसा विन्दते पुमान् श्रीमैत्री उवाच एवमात्मा भुवादिष्ठो परिक्रम्यो गिराङ्गपतिं बार्हमित्यानुमामन्त्रो विवेशो तपसेवनम् अथा विद्यायतो सर्गं दशो पुत्रा प्रदद्ये भगवत् शक्तियुक्तैषो लोकसन्तानहेतव मरीचिरताङ्गिरसो पुलश्चापुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षत्यो दशमस्तत्रो नारद उत्संगा नारदो यज्ञे दख्यो अंगुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणावशिष्टो संजातो भृगु तशीकरात् क्रतु पुलहो नावितो यज्ञे पुलस्त्यः कनयोद्धरीषि अंगिरामुकुतो अरत्नोभिः मरीचिर्मनसो अभवत् धर्मो गुणादीक्षतो दत्तो नारायणो स्वयं अधर्म पृष्ठो जस्मान् तुल्येक भयशंकर भयात्मक रीर्यकामो भ्रू क्रोधो लोभचाधरलस्सर ऐस्याद्वाक् इन्द्रभूमेन्द्रा नीरीभि वायुरघाश्रय छाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्या पति प्रभु मनसो देव तच्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत् वासं द्वितरं तन्नि स्वयंभू हरतिं मनः अकामं सखिमे क्षत्रो सकामो इति नो सुतं तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पीतरं सुताः मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन् नैतत्पूर्वे कृतं त्वद्ये नो करिष्यन्ति चापरे जष्टं द्वितरङ्गस्य निगृह्य प्रभो तीर्येषामपि धेतन् शुश्लोक्या जगद्गुरु जद्दितमानुतिष्ठन् वै लोका किमायो कल्पते तस्मै नमो भगवते जो इदं श्रीनरोझा आत्मस्थं वन्द्यामासो स्वधर्मं पातुमरति सो इत्थं गृह्णतः
पुत्रान् पूरो दृष्ट्वा प्रजापतिं प्रजापतिपतिस्तब्धं तत्याजो व्रीतस्तथा तान्दीशो जगृहुर्घोरानिहारं जडविट्टस्तम कदाचित् ध्यातो सृष्टुर्वेदासं च मूर्खात् कथं सख्यन्यहं लोकान् समवेतान् तथा पुरा चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रमुपवीर नरैः स धर्मैषोपादा चत्वारस्तैवाश्रमवृत्तयः श्रीविदुरुवाच सो वै विश्वक्षिजामीशो वेरादिं मुखतोषिजा जद्दध्येनासीजन् देवो तन्मे ब्रूहि तपोधनं श्रीमैत्रेयुवाच दिग्गजो श्याम अथर्वाख्यान् वीरान् पूर्वादिभिर्मुखैः ससमिज्यांस्तु तिष्ठोषं प्राचित्यं जरात्क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्व्यं वीरमात्मनो स्थापत्यां च सीजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमेश्वरो सर्वेभ्यो एव वक्तृभ्यो सोऽसीदे सर्वदर्शन षोडशो कठो पूर्ववक्त्रात् पूरिष्या अग्निस्ततावथ आप्तोर्जामापि तिराप रात्रौ चो व्यापदेवं सबोषभं विद्यादानं तपो सत्यं धर्मस्येति परानिषु आसमांसु यथा संख्यं मत्स्यजत्सो वृत्तिभिः सावित्रं प्रजापत्यपत्यंसु ब्रह्मपञ्चाठो बृहत्तथा वार्ता संजय शीलोञ्जय इति वैः वैखानसा बाली खिल्यौ औदुम्बरायु फीनपावने न्यासे कूटिरि पूर्वं बभवो हंस निष्कमौ निखिकितये वार्ता सप्तनीति तथैव ताम् एवं व्याधितस्वान् प्रणवो ध्यक्यो दर्शतो तैशोऽन्तिगासनिलो मध्ये गाति शोटशो विभुः त्रिष्टुप् तस्मादस्फुटो अनुष्टो जगतश्च प्रजापति मज्जाया पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहति प्राण स्पर्शसैषा भवज्जीवो स्वरो देहो उदारित उष्मानमिन्द्रियानन्याहुस्तथा बलमात्मनः सराः सप्तो विहारिणो भवन्ति स्म प्रजापति सर्वब्रह्मात्मनान् अस्तेषु अव्यक्ताव्यक्तामात्मनो परः ब्रह्मभावाति विततो नानाशक्त्यो बभृंहिता ततो अपरामुपादायो सोऽसर्गायो मनोदधे ऋषीणां तुर्विर्यानामपि सर्गमविस्थितं ज्ञात्वा तद्धृतये भूय चिन्तयामासु कौरव अहो अद्भुतते तमे तन्मे व्यापी तस्यापि नित्यता नो मेदस्ति प्रजानूनं दैवमत्रो विघातकम् एवं जोक्तोक्तितस्तैषो दैवं चापेक्षतस्तथा कैशारूपमुद्भिराजकायमविशखते तद्भ्यारुविभागभ्यामीठूनं समपद्यते दस्तु तत्र पुमान् शोभुन् स्वाम्भुवोश्वरा स्त्रीजाक्षि रूपख्या महिषी सोमात्मना तदा मीठुनधर्मेण प्रजाढ्येषाम्ब भूरिते नो चैषा शतरूपायां पञ्चापत्यन्यजीजन प्रियव्रतो उटानपादो तिस्रो कन्याचो भारतो आकूतिर्देवभूतिच्च प्रसूतिरीति सप्तमा आकूतिं रुचये प्रादात् कधर्मायुतु मध्यमा दशयादात् प्रसूतिं च जतो आपूरितं जगत् इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरमैत्रेय संवादे सृष्टिवर्णनं नाम द्वादशाध्यायो श्रीमद् राधागोविन्द कृष्ण प्रचारानंद हरि बोल हरि।